मेरे घर के सब जो सामने वाले घर पे अंकल आंटी रहते थे. So this was a couple that used to live there, and they were into farming. Generally, majority of the people were farming there, and उनके 6 छोटे-छोटे बच्चे हुआ करते थे. वैसे वो उतने छोटे नहीं थे, उनसे बड़े थे कुछ तो. मैं करीबन 14-15 years की थी उस टाइम पे, and they had 6 kids. 4 of them were girls. उसके बाद सबसे जो छोटे वाले थे 2 बेटे थे उनके, and there was a tragedy that took place there, जिसमें the husband died. And उसके बाद within the next 1 to 2 years, few things happened, which I remember. First of all, the first thing that happened, जो generally मतलब गांव में अगर आप रहते हैं, specifically if you're coming from a place like Haryana or if you're coming from a place like Rajasthan, you see it a lot that सबसे पहले because the financial condition was not good, one of the members was now missing, so they had to take the kids out of school. तो उसमें जो 4 लड़कियां थी उनको स्कूल से बाहर लेके गया है, एंड उसमें जो उनके छोटे 2 बेटे थे उनको वो स्कूल में भेज रहे थे फिर भी. एंड द सेकेंड थिंग दैट टुक प्लेस विदिन अ ईयर और 2 years वाज जो बड़ी वाली 3 बेटियां थी उन तीनों की शादी हुई. एंड उस टाइम पे आई रिमेंबर द सबसे बड़ी वाली बेटी की एज वाज 17, देन द अदर वन वाज अराउंड 15 years old, and the younger one was about 12 or 13 years old. And the younger one at that time was younger than me. And this is something I remember because generally इस तरीके के काफ़ी incidences हमारे आसपास होते रहते हैं. And बचपन से I used to feel a little out of place. And because of things like these, I always had this innate desire in me to get out of the neighborhood, to actually do something, because it was very difficult for me to feel helpless. I never wanted to be in a situation where I was unable to help myself. Good evening, Vijendra. And that is something I believe became kind of motivation to start studying in school when I was a kid. So I did my initial schooling from my village. उसके बाद करीबन 2nd 3rd क्लास में माय फादर सेंड मी टू दिस प्लेस कॉल्ड अलीपुर, जहाँ पे एक थोड़े से और बेटर स्कूल में एडमिशन हुआ, एंड वहाँ से माय गुड स्कूलिंग बेसिकली स्टार्टेड. तो वहाँ पे जाने के बाद बेसिकली जब आप स्कूल में होते हो व्हेन यू आर इन 4th and 5th, तो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि चीज़ें क्या चल रही हैं, यू जस्ट एक्सप्लोरिंग. मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का बहुत मन था, सो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. स्पोर्ट्स इवेंट हो गया. आई रिमेंबर आई रैन दिस 400 meters या 800 meters का रेस, एंड इतनी बुरी तरह मैं उसमें हारी थी. बिल्कुल लास्ट में एक स्टूडेंट होता है, जब सारे लोग क्रॉस कर चुके हैं फिनिश लाइन में, लास्ट में एक बेचारा हाफता हुआ आता है जिसको लोग कहते हैं बस करो हो गया रेस खत्म. आई वॉज दैट किड. आई वेंट इन जॉइन द सिंगिंग क्लब इन माई 5th क्लास. आई रिमेंबर. एंड वो जो एक स्टूडेंट होता है जिसको टीचर्स माइक के पास खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं आपको बस गाना नहीं है, आपको बस ऐसे ऐसे करना है. तो आई वॉज दैट किड, but I was still very enthusiastic. I even played the role of a tree in our school drama. But फिर 6th class आया, 7th class आया. 7th class was finally the class जिसमें 7th class के जो फर्स्ट डे होता है स्कूल का, उस दिन टीचर अनाउंस करते हैं बेसिकली कि आज नया दिन है, स्कूल की शुरुआत हुई है, लास्ट ईयर किसने कैसा स्कोर किया. एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू नो कि हमारी जो क्लास टीचर थी वो फर्स्ट डे आए हैं. उन्होंने बोला कि हमारी पूरी क्लास में से एक ही बच्चा है जिसने 10 CGPA स्कोर किया है, कौन है? श्रद्धा. एंड आई वाज सो हैप्पी. श्रद्धा खापरा. आई वाज सो हैप्पी दैट डे. एंड यू नो दैट फीलिंग जब स्कूल में आपको किसी चीज़ की थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिल जाए, कोई टीचर आपकी तारीफ कर दे, स्टूडेंट जाके पूछे अच्छा ये नोट्स दिखा दो, ऐसे कर दो, तो आपको फील होता है अच्छा आई एम फीलिंग आई एम गेटिंग अप्रिशिएटेड फॉर दिस. तो यही चीज़ है जो अब रिपीट करनी है. तो आई थिंक दैट वाज द पॉइंट जहाँ से आई बिकेम काइंड ऑफ मोर सीरियस अबाउट स्टडीज. तो फिर लगा कि हाँ अब और मेहनत करनी है. तो 7th में मेहनत कर रहे हैं, फिर 8th में मेहनत कर रहे हैं, एंड इस तरीके से एक स्टूडियस सा लाइफस्टाइल स्कूल के अंदर बन गया. एंड उसके बाद धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आता है. You're all from IIT, तो आपको वो फीलिंग पता होगी when you get appreciated, when you get good marks, your parents appreciate you, your teachers appreciate you, you feel very confident. उसके बाद you start participating in debates.
And I also started participating. I also started participating in debates and declamations. तो उस तरीके से सब मोम हमारा आया ट्रेन है। अच्छे से वाह वाह निकला. वाह वाह वाह। And then finally came 11th शायद class, हाँ। and I also had to make the most important decision जो आप सभी ने शायद लिया होगा कि अब 11th आ गया है, अब थोड़ा सीरियस होना है करियर की तरफ, तो मेडिकल कोचिंग लेनी है या हमें जेई मैं तो कोचिंग खुद लेनी लाइव है. नहीं आई कभी से। तो basically when I was गुड in नाइट 11th, विजेंद्रा। I used to watch this TV show. I don't know if you've heard of it. It's called House MD. Have you heard of the show? Yes. Can you make some noise? I can't see all of you. Okay. So it's a show about a doctor. I used to watch TV a lot in school. तो मेरे पेरेंट्स ने एक्चुअली मेरा आई टेस्ट भी कराया था बिकॉज आई यूज्ड टू ब्लिंक अ लॉट आफ्टर वाचिंग टीवी, बट आई वाज फाइन. तो देयर वाज दिस शो दैट आई यूज्ड टू वॉच, हाउस एमडी, एंड IIT में आकर it तो was मुझे भी सब about a मोम आया doctor. लग रहा है। So I wanted to become a doctor, and I chose the medical path, and I took one more smart decision, which was to study PCMB. And करीबन 3 से 4 महीने I studied PCMB, and then I realized that this is not for me. So biology को I swapped it for computer sciences in school, and I studied learning and writing C++ code लग on नहीं my रहा है notebook, क्यों? and that is basically how my coding journey began. तो जे के डेज आर वो दिन जो हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं ज़िंदगी के अंदर, एंड इट्स अ वेरी रोलर कोस्टर राइड फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. आई रिमेंबर हमारे साथ मेरे स्कूल के कई सारे लोग थे जिन्होंने एक साथ कोचिंग के अंदर एडमिशन लिया था, एंड धीरे धीरे people start leaving the coaching in 11th, some in 12th. तो 11th के अंदर आई यूज्ड टू लिव इन हरियाणा, बट कोचिंग वाज इन मैं और दिल्ली क्योंकि मेरा उस टाइम पे दोस्त ही जो अच्छी बचे हैं। बाप रे। कोचिंग्स होती थी वो दिल्ली में या बड़े शहरों में होती थी. हरियाणा में सोनीपत में उतनी देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ ब्रांचेस. सो 11th के अंदर आई हैड टू मिस अ लॉट ऑफ क्लासेस डिप्रेशन ऑन द बिकॉज पीक। my father did not have the time to take me there. वो हफ्ते में हमारी 3-4 क्लासेस होती थी, उसमें से I used to miss around 2 classes because he did not get क्या days बोलूँ off. मैं? And उस तरीके से I continued the JEE coaching. यहाँ IIT गुवाहाटी में When I स्टडी was का in प्रेशर 11th, बहुत I है। don't know because of social media today, because of internet today, आज generally हर किसी को पता होता है if we want to know कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी लाइक है. आज की बहुत डेट में we मुश्किल have से a lot of स्टडी का चल रहा information. है। उस टाइम पे हमारे आसपास कोई होता नहीं था जिसने शायद इंजीनियरिंग की है या मेडिकल की हुई है, तो हमें ज़्यादा आइडिया होता नहीं था. तो बेसिकली जब मैं कोचिंग जाया करती थी तो my parents also did not have any idea, I also did not have a lot of idea, and we used to treat it like a partial tuition thing. I remember when I was studying for NEET, तो मैंने पापा को बताया कि बायोलॉजी थोड़ा बोरिंग लग रहा है और ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. माय फादर इज ट्राइंग टू कन्विंस मी कोई नहीं बेटा ट्यूशन की तरह ले लो, इतना कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है इसको. तो देयर वाज नो प्रेशर एज सच फॉर क्लियरिंग इट. But after my JEE days, I finally landed at NSIT and college life began. And उसके साथ the coding journey started. तो कॉलेज के अंदर जब जनरली हम आते हैं जेई के बाद, तो जेई के बाद हम काफ़ी अच्छे से सफ़र करते हुए आ चुके होते हैं. अब हम एक नए एटमोसफेयर में होते हैं. वी कम टू अ न्यू सिटी, कम टू अ न्यू कॉलेज, वी मीट न्यू पीपल एंड वी आर रेडी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड कि क्या क्या चीज़ें हैं बाहर करियर की टर्म्स में, दूसरी टर्म्स में एक्सप्लोर करने के लिए. एंड I entered NSIT, and the first day of college was all about what was your JEE rank, what was your JEE rank, what is your branch, what was the cutoff. And generally, if you go to colleges like NIT, NSIT, DTU, the first day is usually about मेरा बस इतने नंबर से IIT देना. मैं जैसे in my class, the rank opener had, I think, a rank all India rank of I think 250 or 500. बट हर कोई जैसे जस्टिफाई कर रहा होता है कि मुझे वहाँ पर मुझे अपने अच्छे पसंदीदा IIT में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही थी कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए लिया है. बेसिकली एवरीबडी इज जस्टिफाइंग व्हाई दे हैव लेफ्ट IIT फॉर दिस कॉलेज.
And mind you, NSIT is not a very well-known college. Even though the cutoff at that time was very good, nobody knows about it. So there's a local college that we have there called LPU, and whenever you tell people in Delhi that you go to NSIT, people ask you, अच्छा वो LPU, sorry, IPU जैसा हो. IPU is Indraprasth University, we cut it from the clip, but people ask, अच्छा वो IPU के पास में जो है, अच्छा वो NTU University जैसा, अच्छा. So people treat it that way, so lots of NSITians are very sad about that fact. Finally, they've changed it to NSUT. Exploring the campus, and उस time पे we also had a lush green campus. Although अब वो सारा cut हो गया and there's a lot of construction going on in college. But first day of college and I was going to my class and रास्ते में there are a lot of snakes. A lot of snakes. Generally snakes we discover in college after a semester or two, but that was the start of college. And college के अंदर जब आप start करते हो, you're very confused. एक तो जब कॉलेज के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर आता है, सबसे पहले तो आप जज करते हो आसपास कौन कौन लोग आए हैं, कौन कहाँ से आया है, कौन कौन सी ब्रांच में आया है, व्हाट इज देयर रैंक, व्हाट आर दे डूइंग, किसी का एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अच्छा चेस कौन खेलता है, ये कौन करता है. And then finally you see कि अच्छा there are also people called seniors in college who are doing more cool things according to you, and you start looking up to them, and उसके बाद you explore a lot, sometimes via society, sometimes via seniors. So I was also very enthusiastic about joining societies. So I joined the dramatic society, the debating society, there was a computer science society, CSI, IEEE. I paid for it, I never went there. So there are a lot of societies that I went to. Eventually, nothing came out of it, but it was a fun experience. So first semester of college was all about exploring. Then second semester of college is also still about exploring, but in our college I used to live in the girls' hostel, and NSIT के अंदर there are two kinds of hostels which they have built. One is for the studious students, the other one is for the non-studious students. And this is specifically for girls. In one hostel there is AC. You can guess कि वो studious या non-studious कौन सी category of students को मिलता है. दूसरा was non-AC. तो AC hostel had limited seats and it was allotted based on your JEE rank and your GPA. wow. So that was the hostel that I used to live in. And उसके अंदर you interact with a lot of competitive students and you see कि कुछ students के सिबलिंग्स होते थे जो 2-3 साल बड़े होते थे, तो आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया लगना स्टार्ट हो जाता है, अच्छा आगे जाके कोई प्लेसमेंट इंटर्नशिप नाम की भी चीज़ आएगी. एंड दैट इज़ हाउ आई केम टू नो कि अच्छा डेवलपमेंट सीखना होता है. देन आई स्टार्टेड डूइंग डेवलपमेंट एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स वेंट. अब देयर इज़ वन स्पेसिफिक थिंग रिलेटेड टू societies that I encountered in my second year. So basically, Microsoft came for an off-campus internship opportunity in second year, and they had this online assessment coding test. So I cleared the coding test. The second round was a hackathon round, जिसके लिए हमें हैदराबाद जाना था. अब I was part of a dramatic society, and हम सब मिलके play करते थे. So it was also very good play. There are very famous theatres in Delhi called the Setan Theatre, and we had also performed at good places like IIM Calcutta. So we had a good play which was winning everywhere. And unfortunately, my Microsoft hackathon was also on the same day as the college play, and I had to make the tough choice of going to the Microsoft hackathon. And that is when I kind of realized that college societies do not care about your individual growth, placement, or internship opportunities. Because my college society was like, how can you abandon the play for this random opportunity? And that made me realize that college societies are good for exploring things, but do not dedicate उतना time to them जितना more than required है. Join societies if you want to explore. Join societies if you want to improve maybe your communication skills. Maybe you're an introvert. Maybe you want to prepare for non-tech placements and you want random secretary and vice president on your resume. Then you can join the societies. But or if you actually have interest in that field and you want to make something out of it, then maybe. But don't. You should always have your priorities clear.
That is the main motive, because I see a lot of students who kind of waste their 2 years, 3 years of college, and in the final year या third year के अंदर generally students realize कि अच्छा we wasted this time. So be mindful about your time, because this is the only asset that you have right now. Generally मेजॉरिटी कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करके मैंने सीखा है, वो ये सीखा है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपनी इंटर्नशिप्स प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना तब स्टार्ट करते हैं इन द थर्ड ईयर, जब इंटर्नशिप्स आएंगी, जो जिन कॉलेजेस के अंदर जैसे आपका हो गया जहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स इंटर्नशिप्स ठीक है, कंपनीज अच्छी आती हैं, वहाँ पे 2 महीने पहले थोड़ा सीरियस होंगे। जब एक दोस्त की लग जाएगी क्लास में, या वो स्टूडेंट जिससे आप बड़ी नफरत करते थे क्लास के अंदर की नोट्स बना लेता है, देखा नहीं है, मास बम के दिन अकेला आ जाता है, उसकी जब लग जाती है, उसके बाद everyone starts preparing seriously for internships and placements, and सेम चीज़ रिपीट होती है थर्ड ईयर के अंदर, सेम चीज़ रिपीट होती है फोर्थ ईयर के अंदर। तो जनरली फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर मैं जो सजेस्ट करती हूँ दैट इज कि स्पेंड योर फर्स्ट सेमेस्टर टू एक्सप्लोर थिंग्स। ज़्यादा टाइम लग रहा है सेकेंड सेमेस्टर भी एक्सप्लोर कर लो, ज़्यादा टाइम लग रहा है थर्ड सेमेस्टर भी एक्सप्लोर कर लो, बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर यू शुड हैव सम काइंड ऑफ क्लैरिटी कि हम क्या डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं, बिकॉज थर्ड ईयर के एंड तक भी हमें क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ लेजी डायरेक्शन वेयर वी आर नॉट विलिंग टू कमिट टू वन थिंग। व्हेन वी कम टू college, when we join college and we are in first year, it's a very new environment for all of us, and जेई के दिनों से हम काफ़ी कड़ी मेहनत करके आए हैं, तो हमारा मन करता है हम कॉलेज लाइफ को इन्जॉय करें, हम देखें, एक्सप्लोर करें। एंड कॉलेज के अंदर डेफिनेटली हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं, बहुत सारी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। हमें फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट डे आके मन करता है लेट्स डू सम फ्रीलांसिंग वर्क एंड लेट्स स्टार्ट अर्निंग ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, एंड दैट इज़ अ गुड फीलिंग टू हैव। कई बार कॉलेज के अंदर आते हैं तो वी सी समबडी इज वर्किंग ऑन दिस स्टार्टअप, वी सी समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर प्लेसमेंट्स, कोई डीएसए के अंदर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, किसी का ओपन सोर्स में बहुत अच्छा नाम है, समबडी इज गोइंग फॉर आईसीपीसी, कोई एआईएमएल के अंदर काफ़ी अच्छा कर रहा है, एंड पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उस टाइम पे इट इज़ गुड टू एक्सप्लोर, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू कमिट टू वन थिंग इवेंचुअली, unless and until you have a privilege that you have a backing from home where you have a big business and you can afford to chill for 4 years and then you do something else, that is fine, but majority of us come from middle class families, and there's a clear expectation from ourselves to ourselves and our parents to ourselves कि हम एक अच्छी प्लेसमेंट लेने आए हैं एंड एक अच्छा करियर बिल्ड करने लिए आए हैं अपने लिए, तो एक क्लैरिटी इन माइंड होनी चाहिए। I believe my college days and the college days of today, they are very different in terms of how students connect with each other. मेरे टाइम पे जनरली इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होता था फर्स्ट ईयर के अंदर, पीपल यूज टू यूज फेसबुक। उस टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, लोगों का एवरेज वॉच टाइम 5 घंटे 6 घंटे नहीं होता था। ठीक है, वी यूज टू ऑल्सो प्ले वीडियो गेम्स एंड सारी चीज़ें होती थी, मूवीज़ होती थी, सब होता था, बट जो एक क्विक डोपामिन वाली चीज़ आज की डेट में एग्जिस्ट करती है, वो जनरली 5 years ago, 7 years, 10 years ago नहीं एग्जिस्ट करती थी। आज की डेट में डेफिनेटली बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज 100% easier to become successful today as compared to 10 years ago, but उसका opposite, it's a paradox, उसका opposite is also true, because today there are so many distractions out there, especially because of social media, that too in the younger generation, it is at the same time more difficult to be able to work towards that success today as compared to 10 years ago or 5 years ago. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए वहाँ पर आ जाती है दैट वी माइंडफुली इन्वेस्ट आवर टाइम, बिकॉज आज की डेट में डिस्ट्रैक्शंस आर समथिंग दैट विल stop 99% of you from achieving your goals, because if there are, let's say, about 1000 students in one batch, उनमें से करीबन 10 स्टूडेंट्स होंगे जो एक्सेप्शनली अच्छा कर रहे होंगे, एंड द रेस्ट विल हैव अ सेंस ऑफ रिग्रेट बिकॉज दे वेस्टेड देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन डिस्ट्रैक्शंस, एंड दैट इज व्हाई इट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट दैट हम अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से ही एक थोड़ा सा माइंडसेट बनाते हुए चलें दैट वी डोंट रिग्रेट थिंग्स लेटर ऑन। एंड दिस इज वन थिंग दैट आई टेल ऑल माय स्टूडेंट्स कि कभी जाके अपने कॉलेज के 4th ईयर के स्टूडेंट्स से पूछना, 4th ईयर जो सीनियर है, फाइनल बैच ग्रेजुएट होंगे अभी, जिनमें से किसी स्टूडेंट की
फर्स्ट जो इनिशियल वीक होता है उसके अंदर प्लेसमेंट लग चुकी है, उससे कभी जाके पूछना वो कैसा फील करते हैं फोर्थ ईयर के अंदर। उस व्यक्ति से कंटेंट, कंफर्टेबल, हैप्पी, इनर पीस वाला व्यक्ति आपको कॉलेज के अंदर आई डोंट थिंक मिलेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में, बिकॉज दैट पर्सन डिड समथिंग, दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अर्ली एंड नाउ दे आर काइंड ऑफ रीपिंग द बेनिफिट्स। एंड दैट इज समथिंग जो अगर हम शुरुआत से ही माइंडफुली प्लान करके चीज़ें चलें तो हमारे लिए हो जाता है। In life, you are already, all of you are from IIT, so there's a majority chance that you get placed in good companies if you work hard. नहीं तो minimum I think 6 LPA का पैकेज आपका placement से ऑफर करता है, कोई किसी ने बताया था। So majority of you will have a good start in your career. I don't want to give you any advice on how to get a good placement package, because you will figure it out. एंड आपके सीनियर्स आपको ऑलरेडी बता देंगे, प्लेसमेंट सेल आपको इंश्योर भी करेगा, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो इफ आई हैड टू गिव एन एडवाइस, दैट वुड प्रोबेबली बी नंबर 1, ड्रीम बिग, डू नॉट ड्रीम स्मॉल। डोंट लेट अ 20 LPA, 40 LPA, 60 LPA पैकेज बी योर ड्रीम। ड्रीम बिगर देन दैट। अपना जो करियर है उसको डोंट मेक इट अबाउट द फर्स्ट पैकेज। एटलीस्ट छोटे से छोटा भी मैं विजन आपको सजेस्ट करूँ तो टेक अ विजन ऑफ 5 to 7 years. Don't try to just do something better. Try to do something brilliant. Try to do something जो कुछ impact create करे, जो आपको better feel कराए कि ठीक है, I had a really good start as compared to majority of India and I took it at a much higher level. उस तरीके से करना, because coming from a premier institution like IIT, a 50 LPA package should not be a dream for all of you. ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ड्रीम बिग। जो प्लेसमेंट की हमारी एक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, डेफिनेटली हम आए हैं कॉलेज के अंदर, वी कम फॉर अ गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, मेजॉरिटी ऑफ अस, एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, दैट इज अ गिवन। बट अपना 5 year 10 years यू आर हेयर टू बिल्ड अ करियर, यू आर हेयर टू बिल्ड समथिंग फॉर योर सेल्फ। तो डोंट जस्ट लेट इट बी अ कॉर्पोरेट or a government or anything. Don't let it be a small dream, let it be a big dream. And ये ज़रूर याद रखना है हमेशा कि लाइफ के अंदर you will not get everything. Sometimes when we are young, we are very optimistic about achieving everything. When we come to college, we are like हम CGPA भी सबसे बेस्ट ले जाएंगे, हम प्लेसमेंट भी सबसे बेस्ट ले जाएंगे, we will be the coolest person in college, हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी अच्छे होंगे, हमारी राहुल नेहा भी होंगी कॉलेज के अंदर, एंड पेरेंट्स भी खुश होंगे, एंड लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी नाइस। बट दैट इज़ अ वेरी अनरियलिस्टिक ड्रीम, एंड लाइफ के अंदर जनरली यू विल नॉट अचीव एवरीथिंग, देयर विल ऑलवेज बी समथिंग जो मिस आउट हो जाएगा। बट इफ यू जस्ट डिसाइड कि यू वांट दिस वन थिंग फ्रॉम कॉलेज, यू वांट टू लर्न दिस वन थिंग, और यू वांट टू गेट दिस वन थिंग फ्रॉम लाइफ, 100% श्योरिटी के साथ, इफ यू आर रेडी टू वर्क टुवर्ड्स इट, यू विल गेट दैट वन थिंग। तो आपको डिसाइड करना है अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर ही, व्हाट इज दैट वन थिंग गोइंग टू बी। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि मुझे ये वन चीज़ अपने लिए पता है, एंड यू वर्क टुवर्ड्स इट विद कंप्लीट फोकस बाय कटिंग ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, तो nobody can stop you from achieving your dream. There is a very famous saying by Steve Jobs that deciding what not to do is as important as deciding what to do. And that I think is the biggest learning that I have taken in the past 4 years of my career at Apna College. Because a lot of times you have to say no to things and you have to start prioritizing, and that is called maturing, and that is called being adult here. So I was talking about my college days. So college के अंदर I started coding and I had to take that tough call which was related to the society, and definitely I went to the hackathon and finally got my Microsoft internship, and I have no regrets of not going for the play. I was part of other plays after that. So sometimes in life you have to make choices like that, where you're part of a college circle, a college society, and you have to be ready to let people dislike you because you have your own set of priorities, and that is how you should take pragmatic decisions. Finally, the third year happened, and then fourth year happened, and then COVID happened, and COVID was when we started with Apna College.
I started Apna college with my full-time job in Microsoft, and it was a really good experience, to be honest. Microsoft taught me a lot of things, and one thing that has stayed with me till now is something related to growth mindset. Microsoft as a company, they're very growth oriented. That's their motto, basically, to empower each and every person on the planet, and they're very growth oriented. So that is one thing that they taught me, and that is something that I try to inculcate in my day-to-day work. So after juggling between Apna college, my classes, and Microsoft, I finally decided to quit my job and do teaching full time. So after about 4.5 years of being at Apna college, I think that journey is very public, so I don't really need to go into details now. Okay? So we have uploaded about more than 1,000 times on the YouTube channel right now. If I count the batch, we have taken there are more than 1,000 plus lectures there. And it has been a great teaching experience. I love interacting with students. Majority of the times I get to meet my students online, so it's a really new and rare experience to meet them in person. जब ऑफलाइन आकर students मिलते हैं and they share their stories, they share their placement journeys. It's a very great experience for me because as a teacher, you guys remind me of my college days and you guys make me feel like I am still in first year. And that is how I relate with everything, and that is how all of my society days and all of my campus days, they come back to me. So being a teacher is a very beautiful profession if a person enjoys it. I'm sure your college professors might be enjoying their profession. So I also have a very funny story about being a teacher. 11th में जब हमें डिसाइड करना था वो करियर आई शुड पिक, तो जनरली हरियाणा के अंदर आइदर वी गाइज हम लोग या तो स्पोर्ट्समैन बनने की तैयारी करते हैं या फिर हम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं. तो नेचुरली माय फादर सेड कि बेटा गवर्नमेंट टीचर बन जाओ तो अच्छा रहता है, फिर आगे शादी वादी भी अच्छे से सेट हो जाती है, तो टाइम भी रहता है, इजी भी है, तो आप आर्ट्स ले लो, ह्यूमैनिटीज़ ले लो और उसके बाद आप बीएड कर लेना और टीचर बन जाओ. तो फर्स्ट somebody has to pick them. तो जैसे इस कॉल ने हमें डिस्टर्ब किया, वैसे ही मैंने अपने पापा को काफ़ी डिस्टर्ब किया था उस टाइम पे. माय फादर टोल्ड मी टू बिकम अ टीचर एंड आई सेड नो पापा, आई वांट टू बी अ डॉक्टर. एंड ही वाज लाइक नहीं बेटा, डॉक्टर में बड़ी मेहनत है, टीचर बन जाओ, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आगे ठीक रहता है. And I fought a lot, and I said नहीं, टीचर कौन बनता है और मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर बनने में एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट है. So I went to become a doctor, then I went to become an engineer, then I finally quit my job and became a teacher. And now my father, a lot of times, he wants me to quit and prepare for IITs. So the main message basically is that you can do anything in life, but you can't make your parents happy if you don't clear UPSC. So that was probably all about me. If you have any questions, we can take up questions. I understand this is an entrepreneurship summit, so I did not cover a lot about entrepreneurship, but placements and internships and teaching is generally my forte. But if you want to ask entrepreneurship related questions, I am also open to them. Achha, do you guys have a hostel curfew? Huh? No? First semester. First semester में होता है, बाकी नहीं होता है. Not for girls, not for boys. In my college first semester, we had a hostel curfew for 6:30 p.m.
हमारी क्लास 6 PM तक होती थी. By 6:30 PM we had to get inside the hostel. For the rest of the years we had the curfew for about 9:30 PM, 9 PM, 9:30 PM. Even boys had a curfew for 11 PM, I think. But they used to do setting with the guard area in college, and we used to go out on the college. It's Delhi. You have to have a curfew. So there's one student. I would like to know more about your journey at Apni Kaksha. As how did it grow as a new platform which gave competition to other existing platforms which were there, and how did you succeeded to build it so much on that scale? I think we were just more enthusiastic about teaching. I like to believe that. Because, see, if. Hello. I like to believe that teaching is very similar to being an artist. If you love your art, there's rarely no comparison. Matlab, two artists can produce the same thing, but if you like an artist, if you have a connect with an artist, if you feel like they have a passion for their work, I feel like I have a passion for my students. I believe in what I teach. I believe in what I teach apart from coding also. So I always try to give my honest and right advice, and I think that sets us apart. What do you think is the future of edtech startups? Because personally, I think that it is already overcrowded with many startups in edtech industry. So, Which industry is not overcrowded? but I mean, talking about innovation and all things, edtech is, I think, oversaturated with innovation. So, what do you think would be the future of edtech? Future might be कि कोई होगा जो IPO निकाल देगा. IPO might be good for a few years, but it's not a very sustainable thing. I don't think even if there is an IPO, in my personal opinion, I don't think it will last more than like 5 years. It's not a very sustainable business like utilities or FMCG. Because edtechs are not run by business, edtechs are run by teachers. And eventually, if you start creating a business out of teaching, students start losing that touch. So as long as you are able to sustain yourself without taking funding, I think that's one of the best routes. Because once you take funding, you have to do a lot of things as a teacher that you might not want to do. So if you want to be true to your art, which is teaching in this case, then I think you can create a sustainable thing out of it, but not on a large scale, as we say, as we imagine edtech startups to do that. But my opinion might change in 2-3 years, I don't know. This is my current opinion. I belong from a small village of Bihar, as you from Haryana. And ma'am, I am 9th grade student, so it's become a very bad state for I'm here as a participant. Ma'am, how could I start my coding journey? I am not good at studies, neither good at studies nor come from a very good district or a very good school. But it seems very fascinating for me to like a life of coder, a life of an IT guy, and it's a dream place for me to come into IIT and become IIT in the future. So ma'am, could you please let me say something about that? So you're currently in 9th class. Yes ma'am. Okay. So being a school student, if you don't want to take the traditional path of clearing jail, I think one of the best things would be to learn something practical. So that would be development. Something like development is something that you can learn. Be it app development, web development. Learn to create something. Websites, apps. That is generally the first step to doing it. Then after that, once you start exploring technology, you can look at other branches. In my personal opinion, cyber security is one branch that I really like, जिसका
future pay I have a lot of hopes on. So that is one way that you can branch out. I am not sure how IITs take admissions without JEE, so I am not sure how you will get in if you don't give JEE. But if you want to start coding, start with something practical, because that is the best way to engage yourself. If you build something, an app, a game, a website, anything, you don't have to think about the technology. Just think about something that you want to build. If you're interested in games, think that this is the game that I want to build, and just start learning the language which is used to build that game. Start learning the language which is used to build that application or the website. So think about something that you want to create and then backtrack and learn technologies according to that. That is generally the traditional path that can help. Then what would be my first step? First step towards the future. So अपना college or by yourself. If you could suggest me something For learning or in general career? for learning coding. For learning coding, generally majority of the things I teach, they are directed towards college students and placement. Yeah, please be raised. You can stand up. Yes, please. Good evening, ma'am. First of all, I'm a big fan of yours. I just used to watch your videos. And मेरा ये doubt है, you left Microsoft and you entered an unpredictable field, that was teaching. Thought that changed your whole perspective of your life and career. Like के आप Microsoft में थे, it was going very good, and अब हमें teaching field में जाना है. I'm a risk taker, I like to believe that. And I always had this thought कि अगर Microsoft crack हो गया तो कोई बात नहीं, worst case scenario is this thing won't work out. And I'll lose about 1 year, 2 years of my life, and then I'll probably get another job of 10, 12, 20. Like इस केस में आपको fear of failure नहीं था, तो इसके Fear of failure तो सबको होता है. There is nobody who doesn't have fear of failure. Everybody has fear of failure. तो क्या हो गया? जब JEE ले रहे थे तभी तो fear of failure था कि नहीं होगा. Thanks so much. Hello ma'am, first of all it was a very inspirational session. My question is, are there any books or podcasts you regularly revisit or would recommend students? I've read Chanakya Neeti 2-3 times. Okay. It's a very interesting book. Definitely read it. It's a little patriarchal, so you have to ignore the bad parts. Okay. But the rest of it is good practical learning if you want to implement. So that is something that you can read. Alright, thank you. Thank you. Good evening, ma'am. In today's generation of artificial intelligence, what skills do you think we should incorporate in ourselves before going to the corporate world? Be a problem solver. The tech industry pays a lot if you're a good problem solver. If you're able to understand a problem, articulate a solution, then you're paid very well in the tech industry. Probably one of the most well-paid jobs tech के अंदर हमें सिर्फ इसलिए मिलती है because you're a problem solver. And if you're a problem solver in the early stages of your career, ठीक है, technology सीखनी पड़ेगी, resume बनाना पड़ेगा, placement पड़ेगा, CGPA लानी पड़ेगी, सारी चीजें करनी पड़ेंगी. But internally, if you're a problem solver, because not a lot of people actually solve problems. A lot of us think about problems and we, complain about problems, but we don't think solutions actively. So if you're a problem solver, then it's a very rewarding career in IT. So AI आ गया, quantum computing आ गया, कुछ भी आ गया. If you're a good problem solver, you'll be able to find solutions when others are dealing with problems. So be a good problem solver internally, and that will help you a lot in long term. Evening, ma'am. Was there any moment in your life where you were faced with a significant failure, and how did you deal with it? I faced a lot of significant failures. So one was probably JEE. I failed to get into IIT. So how did I deal with it? You just think कि ठीक है, नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं. Basically, मतलब कुछ भी, if something goes wrong,
आप कितना बैठ के उसके बारे में आप सोचेंगे. You always have to be forward thinking कि ठीक है. Definitely if something goes wrong, everybody has a right to cry about it. ठीक है, हम थोड़ा सा sad feel करेंगे, 2 दिन बुरा feel करेंगे, सोचेंगे क्यों नहीं हुआ, थोड़ा सा overthink करेंगे. But at the end of the day, you have to tell yourself that you are only responsible for what happens in your life, and you can't let one incident define your entire life. You can't let one bad incident or even a good incident define your entire life. You kind of have to be at a neutral place in life most of the times. You can be happy and sad. You become sad, then you think about what's next. Keep yourself busy. कॉलेज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है नहीं हुआ तो आप आगे बढ़ोगे, आप देखोगे what is the next big thing, what is the next thing that happened. So like to give an example, I had this friend of mine. We used to go to coaching, and we used to compete a lot in our coaching. So there was rank 1, rank 2. There generally the coaching that I used to go in, we used to have a special batch of 12, 13 students, and we used to compete for rank 1, rank 2. And I was गुवाहाटी का like, सीन we also got admission by शरदा खपरा IIT गुवाहाटी में ही है इस टाइम लाइव है ये अभी भी कंफ्यूजन में है. But eventually we both got placed at Microsoft. So sometimes you have to think कि ठीक है, आप अभी something bad happened या उतना अच्छा हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लाइफ बहुत लंबी है ना. I can't let 2 years of my life define what is going to happen for the next 80 years. So if I live till 100 का मैं 2 साल का, you can't regret. You do something else and you can create a lot. If you think in terms of 5 to 7 years, you'll start looking at failures like very tiny mistakes. It won't matter much. आपको लगेगा ठीक है, गिर गए, okay, दोबारा और you start running. It's not a very big thing. Thank you. Good evening, ma'am. My question is actually that like many people have some life-changing experience in their life, which like changes their perspective on the world and how they think. So my question to you was, what is your one life-changing experience, and how did it change your perspective from what to what? So that's my question. What is my life-changing experience? कितने बताऊं मैं? आपके सोचो ना, इंडिविजुअली आप सोचो. How many life-changing experiences have you had? Wasn't JEE a life-changing experience? It has given you lifelong trauma. Isn't IIT going to be a life-changing experience? Isn't placement preparation going to be a life-changing experience? Ask somebody जो already touched placement के लिए बैठे हैं, कैसा फील होता है. So there are a lot of life-changing experiences that happen. Some change in a better way, some change in a worse way. So in terms of life-changing experience, definitely JEE was one of them. College was one of them. Microsoft job was one of them. Apna college is definitely one of the biggest life-changing experience I've had. I had a very small life-changing experience also in school. So I used to participate in school के debates. And जो मेरा first debate था, उसके बाद मैंने काफ़ी debates में participate किया, पर मेरा first debate बहुत special था. So मैंने उस debate के लिए 2 हफ्ते की करीबन तैयारी की थी. हमें हमारे इंग्लिश टीचर ने तैयारी कराई थी. And to go on stage and उस टाइम पे debates ऐसे impromptu नहीं होता था, हमें पूरा डट के जाना पड़ता था, पूरा बोलना पड़ता था. 2 हफ्ते मैंने prepare किया. I was in 9th class. And एक दिन पहले डिबेट से एक दिन पहले आई वाज इन वॉशरूम एंड वाचिंग माय हैंड्स, और एक मधुमक्खी आई और मुझे बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में मैं फोरहेड आके खा गई. एंड बाय नेक्स्ट मॉर्निंग माय एंटायर फेस वाज स्वोलन. तो आई वाज लाइक यार 2 हफ्ते से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, शायद 2 हफ्ते से भी ज़्यादा, एंड क्या हो गया, आई कैन नॉट गो टू स्कूल दैट डे. तो करीबन दोपहर में टीचर का कॉल आता है. शी इज ट्राइंग टू मोटिवेट मी, नहीं बेटा आ जाओ, कोई बात नहीं, विल डू इट, इफ इट्स नॉट पेइंग प्लीज कम टू स्कूल, एंड आपने इतना प्रिपेयर किया है. एंड आई एम अ पर्सन हू इजीली गेट्स मोटिवेटेड. सो आई वाज लाइक ओके, पापा की छुट्टी थी उस दिन. माय फादर इज अ फायर फाइटर, सो ही गेट्स ऑल्टरनेट डेज ऑफ. तो उस दिन पापा की छुट्टी थी एंड हम दोनों बाइक पे बैठ के जा रहे हैं. स्कूल पहुंचे, फाइनली 40 मिनट्स दूर होता था मेरा स्कूल. वहाँ पे आई गो ऑन द स्टेज
And 9th class is probably that time when you feel like everybody is judging us, we're a teenager. And it's with a full swollen face, I'm going on stage and I'm reciting my entire degree. I think that was a big life-changing experience. Okay, being a teenager, they actually helped confidence. So that was a good experience for me. I think this student also had a question. One challenge in online teaching is that एक time आता है कि once you teach everything and you cannot reteach like In offline classes, you can reteach it every year. In online, once you upload that content, it is there for eternity. So, how do you tackle this challenge? कि बाकी content creators what they can do is they can move on to any new trend and do it. But as a teacher, where you have to teach, how do you tackle this challenge where once a time comes you are taught everything? As a teacher, basically your students change every year. So if somebody has learned something from you, they move on. And then you have some new students who probably have different problems now. So the students that I used to teach 4 years ago, they did not have Instagram reels. But now students have Instagram reels, and one of the most common questions that I get asked is how to deal with distractions, because we are very distracted. हमारा कई students का मैंने actually poll किया है, they have 8 hours of screen time, 7 hours of screen time, and I tell them what are you doing with your life. So students के generally problem change हो जाते हैं, उनका पढ़ने का pattern change हो जाता है, and then you kind of change yourself every year and try to teach them in a style जो उन्हें relatable लगे, जिसको student को जल्दी चीजें समझने में लगे. So that is, you basically change yourself to teach students better. In terms of content, coding very ready. If I teach JavaScript today, if I teach Node.js today, वो आज भी वैसा ही है, 5 साल बाद भी वैसा ही रहेगा. But I have to change myself so that my students are able to understand it. And there are mics. मैम No, you can take the mic. हेलो मैम, एज अ MSc मैथ स्टूडेंट मेरा कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है ऐसा कुछ, बट फिर भी मैं आपकी और अमन सर की काफ़ी फ़ैन हूँ, काफ़ी लाइक 2017 से 18 से सुन रही हूँ आपको. और अभी मेरे 2 क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन तो यही है कि कुछ स्टूडेंट्स की तो प्लेसमेंट हो जाती है, चाहे बीटेक के हो चाहे मास्टर्स के स्टूडेंट हो, बट काफ़ी स्टूडेंट्स रह भी जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? तो क्या बैकग्राउंड के साथ MSc मैथमेटिक्स फिलहाल में. तो आपने बेसिकली वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं. व्हाट डू यू वांट टू डू? लाइक मेरा टीचिंग प्रोफेशन था, बट यहाँ पर आकर जैसे स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट मिलता है, तो कोडिंग एनवायरनमेंट मिलता है, बच्चे सारे प्लेसमेंट्स की ओर जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मन भी उधर को जाता है. बट बैकग्राउंड नहीं है, तो अभी लाइक फर्स्ट ईयर MSc का है मेरा, तो स्टडी लाइक एकेडमिक प्रेशर भी काफ़ी फील होता है, तो मैनेज नहीं हो पाता है. तो इसलिए फिर मैंने पूछा कि हाँ, अगर यहाँ से प्लेसमेंट नहीं होता है, जो कि बच्चे सोच कर ही आते हैं कि हाँ हम प्लेसमेंट लेंगे, जॉब लेंगे, बट सिर्फ वो एकेडमिक्स के साथ ही चले जाते हैं, तो उनके लिए आगे कुछ गाइडेंस. देखो, मुझे जो पर्सनली लगता है, सबसे पहले तो हमें खुद क्लियर होना चाहिए व्हाट डू वी वांट टू डू. हमें क्या टेक के अंदर जाना है, क्या ये हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है ऑन कैंपस नहीं लगी, पर हमें टेक प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी है. वो अगर हमारे दिमाग में क्लियर है, देन वी शुड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. उसका मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है. हो सकता है हमें टेक का काम अच्छा लग रहा है, हो सकता है उसके अंदर हमें पैकेजेस अच्छे दिख रहे हैं, हो सकता है दैट इज़ द लाइफ स्टाइल दैट वी वांट फ्रॉम आवरसेल्व्स. तो बेसिकली इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आपको टेक के अंदर जाना है, चाहे ऑन कैंपस नहीं लगी फिर भी ऑफ कैंपस के अंदर जाना है, तब देयर आर स्पेसिफिक थिंग्स दैट यू हैव टू डू टू प्रिपेयर फॉर अ गुड टेक जॉब. आपको सबसे पहले तो अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे. जनरली टेक कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि आपकी CGPA ठीक होनी चाहिए. ठीक होने का मतलब है यू शुड हैव एटलीस्ट 7+, 8+ है तो और अच्छा है. आपका कॉलेज अच्छा है जिससे आप ग्रेजुएट करोगे, इफ यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम IIT गुवाहाटी, तो उसके बाद यू हैव टू क्रिएट अ गुड रेज्यूमे. रेज्यूमे के अंदर आपके पास प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए. जनरली फ्रेशर्स से एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके पास एटलीस्ट 2 फुल स्टैक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस कुछ किया हो उन्होंने, चाहे वेब डेवलपमेंट में चाहे ऐप डेवलपमेंट में. उसके अलावा इफ़ यू ऑल्सो ट्राई समथिंग लाइक मशीन लर्निंग,
दैट इज ऑल्सो गुड साइन। इससे रिक्रूटर को पता चलता है कि आप में टेक के अंदर एक्चुअली इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है बस नाम के प्रोजेक्ट्स बना लिए, आप डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके ऊपर आप किसी एक स्पेशलाइजेशन लेते हो। आप अगर डेवलपमेंट में स्पेशलाइजेशन ले रहे हो, यू गो फॉर ओपन सोर्स, यू गो फॉर अदर थिंग्स, यू ट्राई टू गेट इंटर्नशिप्स फर्स्ट। शुरुआत में हो सकता है हमें अनपेड इंटर्नशिप्स मिले या उतने अच्छे पैकेज की नहीं लगी, पर एटलीस्ट दे गिव अस सम गुड वर्क एक्सपीरियंस। तो आप कुछ इंटर्नशिप्स लेते हो, कुछ और आप काम करते हो, आप हैकाथॉन्स वगैरह में जाते हो, यू ट्राई टू बिल्ड बेसिकली अ पोर्टफोलियो। जैसे एक डिजाइनर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करता है, वैसे टेक के अंदर यू हैव टू बिल्ड अ गुड क्रिएटिव रेज्यूमे। अगर आपका डीएसए के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, यू हैव टू डू डीएसए। अगर आपको मैन कंपनीज के अंदर जाना है, डीएसए के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, तो वहाँ पे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ गुड कोडिंग प्रोफाइल। आपको कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर आप जा सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे पैरेलली वर्क करना पड़ेगा। तो बेसिकली यू हैव टू वर्क ऑन योर CGPA, you have to work on your resume, you have to have good projects, some other extracurriculars which are related to tech. You need to learn about the 4 computer science fundamentals, operating system, computer networks, database management systems, and हमारा जो हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। उसके बाद आपको DSA भी करना पड़ेगा। अगर आप लेट्स से टियर 1 कंपनीज को एक तरीके से टारगेट कर रहे हो, हाई पैकेजेस को, फिर फर्क नहीं पड़ता आप ऑन कैंपस में हो ऑफ कैंपस में, ये सारी चीज़ें आपने करी, प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर 7 आउट ऑफ 10 भी है इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो आपका हो जाएगा एक अच्छी कंपनी। पर आपको पहले अपने लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि इफ नॉट ऑन कैंपस देन डू आई वांट टू डू दिस ऑफ कैंपस। उसमें करीबन आपको मिनिमम 1 ईयर नहीं तो 1.5 साल लगेगा प्रिपेयर करने में, चाहे वो 1.5 साल आप अपने कॉलेज की डेडिकेटेड पढ़ाई का मान लो या फिर वो आप कॉलेज की बात करना चाहते हैं। बट यू हैव टू हैव अ क्लियर गोल। द क्वेश्चन शुड नॉट बी कि नहीं हुआ तो हम क्या करें, द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वांट टू डू, आपको क्या करना है। आपको अगर टीचिंग में जाना है तो डेफिनेटली उसके भी कई सारे स्टेप्स होंगे, आपको टेक में जाना है उसके स्टेप्स हैं। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा मुझे ये करना है, और फिर जाके बस करना है, कुछ पूछना नहीं है, खुद से कर लेना। ओके मैम, सेकंड क्वेश्चन भी था। सेकंड क्वेश्चन इसके रिलेटेड नहीं है, वो आपकी मैरिज के रिलेटेड है। वो ये है कि क्योंकि लाइक होता है ना कि चाहे मतलब एक होता है कि हाँ चलो सक्सेस, जब पैसा आ जाएगा उसके बाद ही मतलब शादी करे तो सही होता है, लेकिन पैसा आ जाए लेकिन अगर एज कम हो फिर भी शादी का डिसीजन लेना चाहिए नहीं ऐसा। क्योंकि मैंने जब आपका सुना तो मतलब 24-25 की एज में मैरिज का लाइक जनरली ये बोला जाता है कि अभी तो बच्चे हो, अभी तो मतलब आगे और कमा लो, अभी जिंदगी क्या ही देखी है, क्यों ही मैरिज करनी है। Yeah, that's why I'm asking that question. Basically, if you feel like you have built something in your career, आप एक ठीक ठाक जॉब लेने के काबिल हो, you are self dependent. It's not like you're dependent. ठीक ठाक पढ़ूंगी, आप इंडिपेंडेंट हो गए, अब आप ठीक जॉब एक दूसरे के काबिल एंड फील लाइक कि अब आपको कोई लाइफ में मिल गया एक अच्छा पार्टनर जिसके साथ मिलके आप कॉमन चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी आप डिसीजन ले सकते हैं, डेफिनेटली जल्दी का टेक दैट डिसीजन इन कॉलेज इटसेल्फ। आफ्टर गेटिंग probably a good stable job, आपके your parents that आप अपने पैरों पे खड़े होने के लायक हैं, बिकॉज बहुत डंडे पड़ेंगे कॉलेज में जाके अगर आप पेरेंट्स को बोलोगे बिना प्लेसमेंट लगे तो एक बार आप पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, बिकॉज एट द एंड पेरेंट्स ऑल्सो वांट कि आप मतलब इंडिपेंडेंट बन जाएं, आप ठीक डिसीजन ले पाएँ। और पेरेंट्स देख पाते हैं कि कोई बच्चा होता है, सब पेरेंट्स को पता होता है मेरा बच्चा कैसा है, सबको पता है कैसे डिसीजंस ले रहा है, बचपन से क्या डिसीजन लेके आ रहा है, क्या इसका थॉट प्रोसेस है। एंड देयर कम्स अ टाइम जो अभी नहीं आएगा डेफिनेटली मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, अभी आपको लगेगा आपके पेरेंट्स आपको मतलब किसी लायक नहीं समझते, इवन दो यू आर इन IIT, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं ठीक है बेटा IIT चलेगा, पर ये हमारे बाल दूध में सफेद नहीं हुआ। पर देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू गेट अ गुड जॉब एंड उसके बाद पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, you have support from your family and you have a clear vision of what you want to do in life. So उसके बाद I think you can take that decision around 24, 25, 26, because what's the point in delaying if you have decided on something. Okay ma'am, thank you so much. Anybody?
So, first of all, we students have internship opportunities in our third and fourth semester. So, as a student in second semester, I would like to ask you that what skills, projects, or experiences should we take so that we can make most out of these opportunities and like be ahead of the crowd? Are you asking about internships? Yeah, Okay. You currently in second semester. the second semester. Basically, you want to prepare for internships and placements. Yeah. What kind of internships and placements? Like for now, I'm just mostly in the exploration phase. Like college and college, that there is some tech, there is non-tech, there is core and entrepreneurship. So if you can give a broader perspective, so First of all, you have to pick a field for yourself if you want to prepare for tech placements or non-tech placements. Generally, अगर आप focus के साथ prepare करते हो, the chances of getting a good placement and a better package increase. If you're somebody जो non-tech का भी resume बना रहे, tech का भी resume बना रहे, तो generally हम कहीं के middle में stuck हो जाएंगे. एक direction decide कर लो, non-tech में जाना है या मुझे tech में जाना है, तो उस field के according आप अपनी पूरी profile build करोगे. दोनों के लिए ही generally a good CGPA is a good thing. Having a tech or a non-tech oriented resume is also good thing. तो दोनों को आप internship से कोशिश करो भरने की, if you can. Tech वाले को tech internship से, non-tech वाला non-tech internship से. CGPA is definitely a criteria. Good communication skills दोनों के अंदर important है. Non-tech के अंदर ज़्यादा important हो जाते हैं. Non-tech के अंदर generally you go and participate in societies, आप एक दो societies में leadership positions अपने resume में दिखाते हो, internships दिखाते हो. You have to learn things like tablets and you have to do guesstimates. तो इस तरीके की चीज़ें वो पूरा non-tech placement preparation है. Tech placements are definitely something else. Tech placements जो मैंने पूरा चीज़ बताया मैं want to repeat. तो टेक प्लेसमेंट्स में वही 5 चीज़ें हैं बेसिकली एक आइडियल रेज्यूमे को जो प्रिपेयर कराती है. एक तो हमारे पास सीजीपीए होनी चाहिए, रेज्यूमे के अंदर अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, फंडामेंटल्स हमें आनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स का एक अच्छा मिक्स होना चाहिए ताकि दिखे कि हम टेक के अंदर एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं, नॉट जस्ट फॉर द नेम से. क्योंकि हर कॉलेज से मेजॉरिटी स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं तो नेम से वाली चीज़ें और सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करने की कोशिश करते हैं. रिक्रूटर बहुत रेज्यूमे देखे होते हैं, उन्हें पता होता है कौन सा स्टूडेंट है जो एक्चुअली टेक के अंदर गया हुआ है, उसको डेडिकेटली वहीं पर करियर बनाना है. एंड डेडिकेटिंग अर्ली ईयर्स ऑफ योर कॉलेज टुवर्ड्स बिल्डिंग दैट रेज्यूमे वो लॉन्ग टर्म के अंदर डेफिनेटली हेल्प करता है. क्योंकि सबको पता होता है कि टाइम बहुत लिमिटेड है. कोई 2 साल में कितना कर सकता है, वर्सेस 3 में कितना कर सकता है, वर्सेस 4 में कितना कर सकता है, उसका मेजर डिफरेंस है. एंड द अर्ली यू स्टार्ट थिंग्स स्टार्ट कंपाउंडिंग. अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर स्टार्ट कर रहे हो, इट्स फर्स्ट ईयर के अंदर यू स्टार्टेड एंड यू रीच टिल योर फोर्थ ईयर, वो चीज़ें कंपाउंड होंगी. इट्स नॉट अ लीनियर ग्राफ. वो चाहते भी कोई स्टूडेंट थर्ड ईयर के अंदर फोर्थ ईयर के अंदर प्लेसमेंट की तैयारी स्टार्ट करेगा वो कवर अप नहीं कर पाएगा. उसके साथ में यू हैव टू डू डीएसए बिकॉज इफ यू सिटिंग ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के अंदर तो डीएसए से भी क्राइटेरिया उसमें अगर आप कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग कर लेते हो वो डेफिनेटली हेल्प्स विद ऑनलाइन असेसमेंट्स. जनरली अगर आपको लेट्स सपोज मतलब मिडिल पैकेजेस के लिए भी सेट करना है कोर्स पे वीडियो प्रैक्टिस सॉल्व एटलीस्ट 300 डीएसए क्वेश्चंस तो आप मोटा मोटी प्रिपेयर हो जाएंगे. यू ऑलरेडी डन चेक तो आपको पता है कि हाँ ठीक है किस तरीके के सवाल आते हैं टेस्ट के अंदर. एक पैटर्न आप रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट हो जाते हो. जैसे फिजिक्स के अंदर मैथ के अंदर पैटर्न रिकॉग्नाइज करके बेसिक सिमिलर लॉजिक डीएसए के अंदर आपको पैटर्न स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग ठीक है किस तरीके की लॉजिक कौन सी लॉजिक कहाँ पे फिट इन करनी है. एंड उसके बाद ऑल्सो वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स. अ लॉट ऑफ us coming from engineering colleges we are introverts. तो कई बार हमें आती है चीज़ें. ये मैंने पर्सनली अपने बैच के अंदर भी देखा है. देयर वाज अ बैचमेट ऑफ माइन हु गॉट सेकंड ईयर इंटर्नशिप एट सैमसंग व्हेन आई वाज डूइंग माय माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप. ही वाज डूइंग अ सैमसंग इंटर्नशिप एंड ही डिड नॉट लाइक बैंगलोर सो ही रिजेक्टेड द पीपीआई ऑफर इंटर्नशिप का जो री ऑफर आता है. बट बिकॉज सेकंड ईयर में ठीक है उसके स्किल के बेसिस पे उसकी इंटर्नशिप लग गई बट हिज कम्युनिकेशन स्किल वाज नॉट गुड. तो थर्ड ईयर के अंदर जब इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज आई ही वाज वन ऑफ द लास्ट पीपल टू गेट एन इंटर्नशिप एंड इवन Samsung rejected him for that opportunity because all of us in class knew कि his communication skills were not that good. उसको चीजें आती थी पर वो explain नहीं कर पाता था इंटरव्यूज के अंदर. And he was coming from a background जिस जहाँ पे उसका English उतना strong नहीं था. तो majority of recruiters they are staying in Bangalore, they are staying in Gurgaon, they come from a very corporate culture and they expect you to have ठीक-ठाक English spoken communication. तो वो थोड़ा सा बायस होता है. तो उसकी तरफ से अगर हम 6 महीने 4 महीने इतनी प्रिपेयर थोड़ा सा कॉलेज के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं. हमारे कॉलेज के अंदर भी डासा स्टूडेंट वाले स्टूडेंट
इनोवेशन लाते थे। पर आपके कॉलेज के अंदर भी कई सारे स्टूडेंट होंगे, कई सारे ग्रुप्स होंगे, सोसाइटीज होंगी, वहाँ पे पीपल आर कन्वर्सिंग इन इंग्लिश। वहाँ पे जाने की कोशिश करो, ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज इंडिया के अंदर वी आर वेरी into discrimination related to languages. I don't want to say it, but it is true. And उसमें अगर एक चीज़ है जो पता ही है आपको कि आपको स्टैंड आउट करा देगी, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो टेक्स्ट स्किल्स को लेके चलनी ही है, वो तो बेचता ही है। टेक्स्ट स्किल्स के बिना अगर कम्युनिकेशन पे काम किया है तो उससे टेक जॉब नहीं मिलती है, कंसल्टिंग में मिल सकती है, पर दोनों के ऊपर ही आपको पैरेलल काम करना है। And definitely, I personally believe if you're going to contact placements, तो keep in mind कि आपको आगे जाके down the line MBA करना पड़ेगा। Thank you. Didi, how you see the future of software development and the hardware development, and also put some light on the market movement toward the other skill-based fields such as consulting and product management? See, both for software development and hardware development, जो लोग actually interested हैं इस field के अंदर और जिन्होंने actually मतलब hard work put in किया है, people who have good courses, चाहे सॉफ्टवेयर में हो चाहे हार्डवेयर में हो, will always be irreplaceable. मतलब ऐसे लोगों की हमेशा कंपनीज को जरूरत है। And these are the people who will be the most paid in their industries. These companies die for a person जो actually genius हो इस field के अंदर, genius की नहीं तो कम से कम ठीक ठाक IQ वाला हो जो काम करने के लिए तैयार है। ये दो अगर क्वालिटीज आपके पास हैं, then मतलब you are irreplaceable, you are unstoppable, you can make a career in any field out there. So as long as you like those fields, you are good at what you do, चाहे सॉफ्टवेयर में हो गया, even समथिंग एज बेसिक एज कि आप अभी वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। वेब डेवलपमेंट हमें वैसे सिंपल लगता है, पर मेजॉरिटी टेक कंपनीज के अंदर डेवलपमेंट का वही काम है, ऐप डेवलपमेंट भी काम होता है। देयर आर नो फैंसी AI जॉब जो मेजॉरिटी लोगों की लगी हुई है। तो जब तक यू आर गुड एट व्हाट यू डू, तब तक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हमेशा अवेलेबल रहेंगी। डेफिनेटली थोड़ा बहुत अडेप्टिंग विद टाइम तो हर किसी को करना पड़ता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर गवर्नमेंट जॉब, तो थोड़ा बहुत तो यू हैव टू चेंज विद टाइम। गवर्नमेंट जॉब में भी जो टॉप के 1% लोग होते हैं वही एक्चुअली पावरफुल पोजीशन पे बैठे हैं। तो इफ यू आर समबडी जिसको पता है कि ठीक है हम किसी भी करियर में जाएंगे, चेंजिंग ट्रेंड्स आएंगे, हम नई चीज़ें सीख लेंगे, हम टाइम के साथ इवॉल्व करेंगे। ऐसा तो है कि आज हम जॉब कर रहे हैं, कल AI आ गया है और परसों हमारी जॉब चलेगी, ऐसा सिनेरियो कहीं पे नहीं होगा। कोई भी चेंज आता है इंडस्ट्री के अंदर, इट कम्स ओवर ईयर्स तक। इफ यू आर एबल टू अडैप्ट योरसेल्फ विद द चेंजेस, आपको चेंज प्रेडिक्ट नहीं कर सकता 10 साल में क्या चेंज करेंगे। बिकॉज रिसेंटली क्वांटम कंप्यूटिंग का भी ऑर्डर आया है दैट इट विल बी इनकलकेटेड इन कॉलेज सिलेबस एंड उस तरीके से। तो AI के बाद आई डोंट नो क्वांटम कंप्यूटिंग कुड बी द न्यू। So you can't really predict the future, but if you're somebody जिसको पता है कि I will change with times, I will adapt with times, वो irreplaceable है, उसे हमेशा अच्छी opportunities मिलेंगी, and they will be the people who will be most paid in their industry. The second question was related to product management. And actually, I also wanted to ask that the market movement towards other skill-based fields such as consulting and product management. Consulting and product management को already एक software था, तो there is not a market movement as such. आपका से क्यों लगता है there is not? Actually, some people say that software is something stagnating. I feel like not a lot of change has come in terms of the number of opportunities that are available in each field. Hardware definitely is a good field अगर आपका actually interest है तो। मैं ऐसे hardware को कम नहीं समझती, मुझे लगता है AI का अगर अच्छा फ्यूचर है तो hardware का उससे better फ्यूचर है। That is my personal belief. अब product management and consulting, see, product management and consulting, मतलब if you are interested in them, you can go and create a future and see, asking कि इसको कंपैरिजन कर दें इसके साथ, इसका कंपैरिजन कर दें इसके साथ, हर फील्ड में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं।
जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए. There are